जो अर्निंग्स क्वालिटी आ रही है, हमारा अर्निंग सीजन शुरू हो गया है, अभी तक जो आईटी, बैंक्स, कुछ और सेक्टर के जो अर्निंग्स आए हैं, उनको देख के आपको क्या कॉन्फिडेंस मिल रहा है बाजार में, या आप बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड नहीं हैं? क्योंकि आफ्टरऑल बाजार का डायरेक्शन तो अर्निंग्स के डायरेक्शन के साथ ही चलेगा। सो अर्निंग क्वालिटी फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी बेटर है, बट अगर आप मुझे बोलो कि रोबस्टनेस हेल्दी नहीं, वो नहीं है। क्योंकि ज्यादातर जो अर्निंग सपोर्ट आ रहा है वो रॉ मटेरियल साइड के स्लो डाउन होने से आ रहा है या क्रूड के कम होने से आ रहा है। तो इट इज नॉट गिविंग मी द टॉप लाइन, इट इज गिविंग मी द मार्जिन इंप्रूवमेंट विच इज गुड फॉर द अर्निंग्स, बट स्टिल द टॉप लाइन इज मिसिंग, the overall sector improvement is missing, overall GDP growth is not helping. So I'm not very happy, barring few sectors where I'm seeing the earning quality is improved, like private banks have done well. But मुझे ऐसा लग रहा है कि possibly credit growth can moderate going forward. So, but that sector looks quite good. Capex बहुत अच्छे numbers लग रहे हैं, आ रहे हैं, बट वैल्यूएशन इतने ज्यादा हो गए कि केपेक्स थोड़ा अनटचेबल हो रहा है। 6-12 महीने पहले यही स्टॉक आपको 1/3 प्राइस पे मिल रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि वहां पे ज्यादा मोमेंटम है। तो ब्रॉडली अगर आप देखें तो market is divided into two parts. Clearly, the earnings are right now more pushed by the margin improvement because of the commodity or raw material price coming down, not because of the top line growth. So top line growth is missing. It's less compared to what we could have expected in a normal year. राइट विक्रम, जस्ट रेफरेंस पॉइंट से अगर हम बात करें कुछ स्टॉक्स की, क्योंकि आपने केपेक्स की और मैन्युफैक्चरिंग की बात की, मैंने देखा कि आपके स्कीम्स में मुझे किर्लोस्कर ऑयल इंजन, फिनोलेक्स केबल जैसे कुछ स्टॉक्स नज़र आए। मैं समझना चाहता हूँ आपकी थॉट प्रोसेस इन बिजनेस मॉडल्स के ऊपर, और काफ़ी आपने अर्ली एंट्री कर ली थी, अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है, 8-10 साल से चले नहीं थे। आपका क्या थॉट प्रोसेस रहा है मैनेजमेंट्स और बिजनेस मॉडल को लेके? तो मैं स्टॉक की बात नहीं करता अजय, एज यू नो, बट आई थिंक या यू राइट। हमने थोड़ा जल्दी पिकअप किया था और हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अजय कि ये इतने जल्दी भाग जाएंगे या डबल ट्रिपल हो जाएंगे। बट या हमने फोकस किया था कि केपेक्स साइकिल रिकवरी है, अगर पब्लिक केपेक्स होता है तो देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर विच इज गोइंग टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ, एंड देन वी प्लेड दैट साइकिल टू सम एक्सटेंट वेल, आई कैन से दैट इन मेनी स्टॉक्स। आइडिया ये है कि दैट वैल्यूएशन वेरी वेरी cheap. So I'll give you example of one stock which we picked up at say 8p multiple. Now it's a 22p multiple 1 year forward. So we are not very comfortable buying at 22p multiple. There can be exaggeration. There can be another 20, 30, 40% upside, which we don't want to kind of talk much about it. But broadly, that sector looks like at least price to perfection, because as you rightly said, that some of the stocks have not moved for many years, right? So actually this is kind of recovery. And even आप capex cycle भी देखो इंडिया की, पिछले 10 साल में कोई बड़ा केपेक्स हुआ ही नहीं है। देयर इज नो कोलैबोरेटेड एफर्ट ऑफ प्राइवेट पब्लिक केपेक्स इन अ बिग वे, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग इट्स आई कैन से two good things happening at the same time. One, deglobalization, which is helping you to do a more make in India. Government is doing very good job in terms of making this effort and doing right effort to bring more and more production capability in India. A lot of global guys are coming and putting money into Indian capex side. So I'm seeing that manufacturing boom along with the capex is actually it's a perfect recipe which is happening right now in the country, where we are seeing that capex cycle has actually picked up after a few years. I'm happy that interest rates are stable. If inflation interest rate goes up, then we may see some kind of short term dent in that. And being an election year, I'll also see the private sector will be not will be relatively slow to spend a lot of money. So I think broadly capex cycle is looking good over a 5 to 10 years time. Only valuations have run much higher of the time, like any cycle. एक और